First law is about conservation of charge, that amount of algebraic sum of currents entering a node should be equal to 0. Don't forget the word algebraic. Second is Kirchhoff's voltage law, in which algebraic sum of voltages around a closed path or loop, or somebody can call it mesh, should be equal to 0. तो एक नोड से चलेंगे, उस नोड तक आएंगे, algebraic sum of voltages करते जाएंगे, we will be doing algebraic sum of voltages, that should be equal to 0. Correct? So Kirchhoff's law is clear, Ohm's law is clear. तो Ohm's law plus Kirchhoff's law, Kirchhoff's voltage law, is sufficient to analyze all these basic circuits. Ohm's law is V is equal to IR, and Kirchhoff's law is in two parts, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. ये दोनों मिलके sufficient हैं सर्किट एनालिसिस करने के लिए. ठीक है? तो अब हम लोग थोड़ा सा ये सबने नोट डाउन कर लिया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ. Yes sir. Very good. So now let us apply them. तो अप्लाई करते हैं जरा. चलो, तो ये एक आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन है, देखना ऑनलाइन स्टूडेंट दिखाई दे रहा है. चलो अब इसमें जरा लगाते हैं एल्जेब्रिक. सो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं. वी विल कॉल दैट KCL. क्या लिखूं? समेशन I इज इक्वल टू 0. एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट शुड बी 0. सो व्हाट आर द कमिंग वन? I1, I3, I4 minus what are the leaving? I2, I5. So this is first law, which is, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, amount of current entering the junction is equal to amount of current leaving the, same है दोनों, और algebraic sum of currents is equal to 0. और अगर मैं कोई closed boundary देखता हूँ, मान लो मैंने ये बाउंड्री बना ली, तो इस बाउंड्री में भी जितनी करंट एंटर कर रही है और जितनी इसको लीव कर रही है वो भी इक्वल होगी. दैट इज सो ऑब्वियस. Most of the time we will be using node, not boundary. Okay? हम ज़्यादातर क्या यूज करेंगे? Node. But it also applies to a boundary. If we draw a boundary, amount of current entering the boundary should be equal to amount of current leaving the boundary. So you just see in this boundary how much current is entering and how much current is leaving. This is also conservation of charge. Online students, clear? Very good. So ये Kirchhoff's current law हो गया. Now